प्रसाद, हाँ हम पहुंच रहे हैं। रेड कार्पेट डालू क्या? So how do you feel going back to Mumbai? I feel very good to be back in Bombay, but one thing I dislike is the traffic. But you can't help it. When you live in the city, you deal with the traffic. You romanticize it. Wow, traffic. Wow, यार. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आज मी असं प्रयत्न करणार की मी फक्त मराठीतच बोलणार. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस वीडियो चलचित्र में. आज हमारी यात्रा शुरू हो रही है थाने से और हम कहाँ जा रहे हैं? श्री प्रसाद के गांव. Welcome to my channel, guys. This is Prasad. This is my friend. He's a very old friend of mine. That is Piyush. Piyush, excited? Yes, it's very exciting. Do it गाँव का खाना. Let's go. We made an impromptu mini road trip to this quaint village of Sange in Maharashtra. A few moments later. काय झालं? कोण? क्या चाहिए तेरे को? मेरे को बता. कुछ लोकेशन डालूं क्या? Songs play करूं? ये बीच में मैकडॉनल्ड्स आएगा क्या? Long drive. हम क्या करने वाले आज? किसको दिया? एक काम कर, तू ही चला. नहीं नहीं नहीं. Nothing too special, but sometimes the beauty in nothingness is what matters. Keep watching. So it's been, I think, 3-4 hours since I've been in the car, and our mini road trip is coming to an end. We're finally reaching Prasad's house, और हम पहुंचते ही लंच करेंगे. लंच. After 3 hours of driving from Mumbai, we reached Sange. सनफ्लावर दिख रहा है क्या देखो? Oh wow! Where's your house? ये इधर वो टाकी है. टाकी के ऊपर जाना है हमको. देखिए नेटवर्क इधर है. सनफ्लावर्स देख कैसे लगे. Oh wow! And were welcomed by Prasad's sweet parents and his fluff ball Fluffy. And I immediately entered the kitchen to watch how Prasad's mom was cooking for us. So Prasad's mom has specially prepared some gouty chicken for us. Looks really delicious and it smells great. चूल्हे पे बना है क्योंकि इसका स्वाद कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है compared to gas. That's, I think, like a basic cooking thing that all of us should know. When it's prepared like this, like so authentically, the taste is delicious. I can't wait to eat actually. Prasad, तू रुका है ना खाने को? नहीं तू कर ले. क्या करूँ मैं? और अच्छे से बनाओ उसको. और अच्छे से बनाओ. क्या बनाओ? तूने बनाया ना ये. We're having some turicha शेंगा. इसको ऐसे you just press it. तू भाजीच दे. हाँ भाजी दे ना तुला तुझी. डाळ पण आहे. हाँ भाजी डाळ वगैरे ते बोल. Easy. तू जेवली? मी नाही जेवलो. एकच जेवूया ना आपण बसूया. It tastes like chana. You know the chana that we serve when Mother Mary comes to your house? खानामध्ये काय The boiled chanas basically. फिश खाते ना म्हणजे काय ते पण नाही खात. फिश म्हणजे तेच मच्छी. फिश म्हणजे मच्छी. नाही मच्छी खाते. I think cooking with family in itself is so beautiful. There's banter, there's laughter, and such great energy you pour while you're cooking your food. And I think that's why it even tastes so much better, right? हो आम्ही टाकीच्या मध्ये बसतात ताट घेऊन. आसू 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 कोंकणी में आसू है. हाँ मेरा दोनों भी मिक्स हो जाता है. लाइक कोंकणी एंड मराठी मिक्स होता है तो वो कुछ अलग ही बन जाता है. बीच बीच में हिंदी भी आ जाता है. बाबा कुठे? तुझं जेवण नेऊन जाणार. नाही जेवा तुम्ही जेवले का? कुत्रा तुझं जेवण नेऊन गेला. पियुष हाय हाय नको खाओ. पियुषाचं जेवण नको खाओ. कोई भी नहीं है. थांब
था मी पण येते. नहीं नहीं रुक जा तू. So excited to eat food in a very different style today. आ जाओ. Michelin star, PP's restaurant. Let's go. The food looked so wholesome and it smelled like it was made with so much love and affection. Indeed, a lovely meal with Piyush and Prasad. Okay, this is तांदळाची भाकरी. भाकरी. मला बोलायला दे यार. Sorry. काय तू असं करतोस? बस. कितना फर्क होता है अपने नॉर्मल चिकन और इसमें ना. और ये इसके ऊपर भी बनाया ना. चूल्हे चूल्हे पे तो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है. बहुत ज्यादा. Let me actually taste the chicken. Wow. You can feel the freshness of it. Dude, it looks so fresh. उधर कौन जा रहा है दोस्त तेरे? मच्छी. मशी. तो कितने अच्छे से मच्छी खा सकता है? सब पूरा. I'm the best I feel. You really? हाँ. Bro, are you serious? You just ate the fish with the thorns. Yeah. This fish you can eat like that. Yeah. Damn good. यार the fish is so fresh. यहाँ का खाना like if you just imagine yearly तो ऐसे खाना खाएगा तो कितना healthy you will be. सब ऑर्गेनिक है. अभी ये जो सब्जी भी अपन खाएंगे ये भी ये इधर का ब्रिंजो वांगा जो भी है तो इधर फार्म से उगाया हुआ ही है और इधर कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज ही नहीं करते बेसिकली. Correct. हाँ. तो यार इसलिए ना गांव में like people who live here also like even when they get old they're so fit. अभी मेरे मॉम की जो ग्रैंडमदर है वो 105 इयर्स की है. अभी कल ही जाके वो लोग मिल के आए. 105 इयर्स. वो कोविड भी होके गया उनको. अभी कुछ नहीं हुआ. अभी हम कहाँ जा रहे हैं पता है तुझे? कलिंगड़ देखेंगे. येलो कलिंगड़ देखेंगे. स्वीटर देन द रेड वन. रेड कलिंगड़ तो मैं हूँ. Now, before we head to the watermelon farm, we stop to pick some fruits and also eat some. Some really delicious guavas and chikus. Piyush, you must taste this. Nice? मजे करो. अरे मोटे. Oh my gosh. आइसक्रीम. कितना मीठा है पता है. नॉर्मल चीकू से अच्छा है कि नहीं? I can smell it here. चीकू. इसको टेस्ट कराए. इसको टेस्ट कर मतलब तो बोला तो चूक लगेगा इसको. देना उसको. उसको देना. प्रसाद भी गाँवकडचा मला सगळं माहिती आहे. हेला देना यार. क्या भुक्कड़ जैसा खा रही है तू. उसको दे. यार एक तो पेरू दे दे मुझे. ये मैं बचा के रखूंगी एक्चुअली. कोई देखेगा नहीं मैंने कहाँ डाला पेरू. बाय. Gosh, I am so full of fruits. After eating a lot of guavas and chikus, we stopped at a nearby nursery to taste some juicy star fruits. कलिंगड़. I've always eaten star fruits that are sour. Piyush, you look but at never this the tree. ones that are sweet. This is the star fruit. Yeah. Oh my gosh. You know what this tastes like? ये ना ऐसे आई थिंक डायरेक्ट खा सकते हैं. प्रसाद इसको डायरेक्ट निकाल के खा सकते हैं राइट? हाँ. Cheers. Cheers. मुझे ये वाला दे येलो वाला. हमें तो पकावा चाहिए. क्योंकि तू मुझे बहुत पकाता है. खा के देख कैसा. खट्टा मीठा सब कुछ. सो जूसी. बग किती आहे. बग. Gosh, I'm so full. You're not buying it from the fruit shop without chemicals. You're plucking it from the tree.
डायरेक्टली तुम खा रहे हो. आई थिंक इतना इट्स सो ऑर्गेनिक, इट टेस्ट सो क्लीन, टू गुड. Bro, I'm so full of food right now and so full of fruits. I can barely sit. यार प्रसाद कितना खिलाया यार तूने मुझे. ऐसे ही यार, ये प्लान है तेरे को किडनैप करने का. क्या कि मैं चल नहीं पाऊंगी. हाँ. थैंक यू. ले 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 ले. So cute yaar. Hi. We are finally going to see some Kalingads and to actually get some Kalingads, maybe eat some Kalingads. Kalingads! Mission Kalingad! Thank you. तुमचं आहे? हो हे आमचं कराटे. हो. आणि किती वर्षांपासून तुम्ही इकडे करताय? हे साधारण झाली 10 वर्ष कलिंग. 10? ओ वाव. आणि किती टाइम लागतोय? किती दिवस लागतात? साधारण याला दिवस लागतात 3 महिने लागतात, म्हणजे 90 दिवस. 90 days food. 90 days, ओके 3 months. हे तुमचा पुरस्कार. ऐसे ही खा सकते हैं. तो स्वीट यार. ब्रो रियल रियल कुत्ता. रियल. ज़्यादा बोलने का था, but really very sweet. Too good. If you're a person who removes the seeds of the watermelon while eating it, please don't do that. खाना होता है यार वो भी. I'm first. What's happening here is that they're selling it to certain people by kilo while they're weighing it. अरे tell her to eat now with me. दोघं एकत्र खा हातानेच खा. 3 1 2 3. तुमचं नाव काय? मयुरी. मयुरी म्हणजे ते मोर ना. तुम्हाला मोर सारखं नाचायला येतो का? तुला सगळं जमतं, गौरीचा जमतं, लग्नाचा जमतं. पाऊस आला तर तुम्ही नाचतात. पाऊस आला तर मयुरी असं आहेत ना तुम्ही. पुरस्कार मिळाला आहे 2 कलिंगड. थँक्यू. We're doing a competition. Who eats the watermelon the fastest? Okay, 3, 2, 1. You only decide who's the winner. हो गया ना. Dude, तूने कैसे खाया यार? सही कहा मैं, तेरा बाकी है अभी भी. चल. Thanks for the watermelon. Kalingad is in the car. चलिए अभी जाएंगे सनफ्लावर के पास. Oh my gosh, this looks like heaven right now. हाँ, मुझे अच्छा ठंडा ठंडा फील हो रहा है. The sun was almost about to set, so we had to head to the most beautiful part of the day, the sunflowers. अभी 60 days के बाद ऐसा हुआ, like after a month वो लोग जब मर जाएंगे तो इसके अंदर का जो ये रहता है ना Seeds. तो उसका अपन Oil निकालते हैं basically. Oh, sunflower oil. Sunflower oil. Seed oils, yeah. And ये इसलिए मधुमक्खी तो है ना यहाँ पे. सन वहाँ है, यहाँ नहीं है.
सन ले रहा हूँ मैं. Acha. Prasad's family made a sunflower farm and make organic sunflower oil from it. Wow, this is so beautiful. I've never been in a sunflower field before. This is gorgeous. And just like that, an unusual yet beautiful day came to an end.